हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हैप्पी चिर्प। आज मेरे पास बैठी हैं ज़ारा मकबूल, हु हैपन्स टू बी अ थेरेपिस्ट, एंड आई वुड लाइक कि वो ख़ुद हमें बताएं कि व्हाट kind of therapy she practices. I'm having her here because I really want to have an intimate, quite frankly, an intimate conversation with the therapist about mental health, what to expect in therapy, hota kya hai, and why do we really need it? Because जो mental health और therapy conversation है वो in the past couple of years बहुत mainstream हो गई है, but I also know that it hasn't been talked about in depth either. So that is something that is the kind of gap that I'm trying to overcome through this conversation. So let's get into it. Assalamu alaikum, how are you? Walaikum salam, how are you? Thank you for having me here. Thank you for coming. I'm good, thank you. So at first, आप हमें please बताएं कि what kind of therapy do you do in the most simplest words? Okay, so just like in a medical profession, you have a surgeon, you have a gynecologist, the different sort of specialization that the doctor does. Similarly, therapy में आपने CBT के बारे में सुना होगा कि कई CBT therapist होते हैं, which is cognitive behavioral therapy. ह्यूमनिस्टिक थेरेपिस्ट होता है. सो डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं बेसिकली थेरेपी में. सो मैंने 2-3 मोडालिटीज़ में आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ. सो फॉर एग्जांपल आई वर्क साइकोडायनामिकली, जिसका मतलब ये है कि पास्ट को, चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा हम अटेंशन देते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि हाउ डज़ इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट लाइफ ऑफ द क्लाइंट. एंड देन आई एम ऑल्सो ट्रेन्ड इन इमोशनली फोकस्ड थेरेपी. जब मैंने कपल थेरेपी शुरू की थी तो मुझे कहीं ना कहीं जो मेरी ओरिजिनल ट्रेनिंग थी उसमें वैक्यूम फील हो रहा था. एंड आई फेल्ट आई नीडेड समथिंग to work with relationship counseling. So then I did a training in that. So there are 2-3 different modalities जिनको सबको मैं use करती हूँ when it comes to my work. Your work. Yeah. Right. And how long have you been doing this? So I've we were discussing before, I started training in 2014. Initially I was working with the agency I had trained myself from, but since 2019 I have an independent practice, and it's going on since then. So how and why? पहले तो आप हमें how में ही शायद why बता देंगी, but how did this happen? Like, how did you end up becoming a therapist? And so when I was in college, I had psychology as a subject, and I loved it. Like I sort of fell in love with psychology, and somehow I'm a 90s kid, and I remember my understanding was that the only profession I can pursue within the field of psychology is to become a psychiatrist. And science पढ़ने की हिम्मत नहीं थी, and so I thought, okay, this is it. And so then I did my master's in mass communication, and I'm a writer as well. So I just I was a writer for the last 20 years. And I moved to Islamabad, and I came to know of this place that was offering counseling courses. And initially it was just a self-awareness course. And bas usse I got more and more fascinated with my own psyche and my own self, and I started understanding myself very differently. And I think I'm very, very lucky that the subject that I'm so passionate about, I was able to convert it into my profession. That's true. So writing is also going on now, and I mean, this is my main line of work. Main line of work. So I think also mass communication भी is playing out, and of course psychology as well. Interesting. So where was this something that you always wanted to before that? Like you said कि college में you found your interest in psychology. उससे पहले कभी सोचा था that you will end up becoming a therapist? Not at all. Like even when I joined that level 3 का एक self awareness course, it was just a once a week class, and because I was just freelancing at that time, and I could feel I was very restless within myself. Like I felt I'm not getting a space for my mental energy, and I was very hyper, and OCDs were triggered, and cleaning the house do dafa and all that. So I had never thought कि I'll be working so consistently, इतना एक full time profession मेरा therapy बन जाएगा. मुझे नहीं idea था. And I think उससे जो मैंने सीखा, and something I like to share with others, कि at times just take that one small step. हमारी एक human nature है कि हमें outcome पहले से मालूम होना चाहिए कि अगर मैं काउंसलिंग का कोर्स कर रही हूँ तो इसका क्या मतलब है, वे विल इट गो. सो वो थोड़ी सी एक ओपन एंडेड स्टांस से बड़ी जिंदगी में समटाइम यू सरप्राइज बाय व्हाट यू बम्प इनटू. सो आई हैड नो आइडिया दैट आई विल बी टेकिंग इट ऑन एज अ फुल टाइम प्रोफेशन, एंड आई एम
still continuing to train myself and educate myself and grow in this career. Absolutely. So is this something that have you ever taken therapy? Were there therapists in your family? How was that taken? Because therapy or mental health jo hai, this is more of a recent thing, right? So when you started doing it, and I think Pakistan में तो उतना ज़्यादा नहीं था, and you don't hear of a lot of therapists. बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढ के किसी से पूछ के लोग मिलते हैं. So आपको क्या लगता है from then and now, how has that progressed? So like I'll be honest, even when I joined level 3 का अपना वो कोर्स, मुझे पता ही नहीं था कि ये एक प्रोफेशन भी होता है. मतलब मुझे इस हद तक I had no idea कि there's a profession where there's a psychotherapist and you don't need to be medically trained to come in this field. Like I said, back in 90s, my understanding of the professions that are possible in mental health, और हमें पढ़ाया भी तो ये चीज़ somehow कभी, because psychotherapy मुझे लगता है कि इस सेंचुरी में 20th सेंचुरी में like 2000 onwards शायद पिकअप ज़्यादा हुई है. बिल्कुल. मुझे जैसे याद है कि in 90s there was I was going through something and I wanted some sort of input about myself and I just went to a psychiatrist and I had a discussion. और वो अपने अंदर से कहीं कोई मुझे एक फीलिंग थी कि मुझे मेरा हो सकता है कोई ब्लाइंड स्पॉट हो और मैं किसी को जाके मिलूँ. थेरेपिस्ट का मुझे नहीं पता था कि एक फील्ड भी होता है. तो कोई फैमिली में नहीं था and when I started, so personal therapy was a requisite for us. So that was again a very, very scary experience because here you are sitting before someone and somehow there is a bit of this obligation that you need to talk about yourself, and talking about yourself is very hard. It takes, even now I think after years and years, I mean I've been taking therapy since 2014 now. So it's all these years and at times people feel कि 6 महीने हम ले लेते हैं, हम 1 साल ले लेते हैं, अब क्या नई बात होगी आपको अपने बारे में जो पता चलेगी. लेकिन to be honest, every session I discover something new about myself, even if my external circumstances might not have changed in the last few months or over years, because इतनी साइकी कॉम्प्लिकेटेड है. सो अगर आप एक दफ़ा वो एक बटन स्विच ऑन कर लें अपने अंदर, वे यू हैव दिस वांट एंड दिस नीड टू नो अबाउट योरसेल्फ, सो देन यू बिकम मोर अवेयर एंड अवेयरनेस की तो कोई लिमिट ही नहीं है. Very interesting. Yeah. So it was an interest of yours that led to then. Yeah, it led to something much bigger than I had imagined, to be honest. And you love your work. I love it. I love it because it is so fascinating. Because see, every session, even with, I mean, I've been working with some clients since 2019 now. Even then, every session, the person is in a different space, a different head space, emotional space. कोई नई कहानी है, कुछ, and I'm different with that same client. For the past 4 years, who's coming every week, I'm not the same person every time either. Of course, yeah. So it is very fascinating and very fulfilling as well. Yes, especially when you see people make those changes and then you get, and it's very validating as well to have that kind of impact. You see the results. Of course, yeah. Okay, so you said कि आपको खुद therapy लेनी पड़ी उसके लिए, and that's you realized कि कितनी बड़ी बात है to talk about yourself with someone, and like you said, it's a very difficult thing to do, especially like to be in such a vulnerable position, to share so much, to expose yourself. So I think that is one of the reasons that a lot of people hesitate going into therapy. कि अगर वो सोच भी रहे हैं कि this is something that they need to do or they want to do, तो उनको तैयार में कैसे जाकर, like how do I open myself up to someone? So what do you suggest? How can you convince someone to sort of overcome that barrier? So I think इसमें देखो 2-3 चीज़ें. सबसे पहले ये कि अवेयरनेस नहीं है कि थेरेपी में है क्या. Most people still don't know कि how can talking to somebody for an hour make any difference in the problems that we're having, right? Secondly, unfortunately in Pakistan there is no regulatory body, so therapists have no license as such. So anyone can do anything and then we do see problems emerging, right? So 1-2 चीज़ें वहाँ आपको एक सेफ्टी की बहुत फिक्र होती है हर इंसान को कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगी कि नहीं. people are opening up their biggest. बिल्कुल. एंड आप एक क्लोज सोसाइटी में रहते हैं. नॉर्मली मेरे पास जो लोग आएंगे वो फाइनेंशियली एबल होंगे. द मिनट वी से नंबर्स आई नोटिस हाउ वो फेसबुक पे कॉमन फ्रेंड्स आ जाता है पॉपअप. सो जैसे मेरी एक पर्सनल प्रैक्टिस होती है कि व्हेन आई सी दैट आई मेक श्योर आई टेल द क्लाइंट कि लुक, आई थिंक वी नो समवन who's in common, but just to show you that because I'm aware of the fact कि that can be a question in the mind कि अच्छा ये कि मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँचेगी. I think सबसे पहले अगर आपको थेरेपी की तरफ इंक्लिनेशन है तो tell yourself कि I'm just going to sign up for 1 session.
because it is a big risk. So accept that it's a big risk. You don't have to fight that and try to challenge yourself कि नहीं मैं क्यों इतनी, why am I making a big deal out of it? It is a big deal. Secondly, ask your therapist where they're trained from. Secondly, if they have a supervisor. Lot of people in Pakistan do not know कि every therapist should have a supervisor. अच्छा. और supervisor का रोल क्या होता है कि जैसे मैं जिन clients के साथ, for example एक client के साथ मुझे नहीं समझ आ रही, 1 साल गुजर रहा है, I'm feeling very stuck, the client is stuck, I'm feeling lot of frustration. So then I take that client's information to my supervisor without naming him, and वो एक again confidential space होती है जिसमें he then might point out my blind spots, we explore what is happening. So I need that person. So he's basically the one who I'm accountable to for my ethics, for my the work I'm doing. अगर मैंने पेमेंट ही बढ़ानी है तो मैं पहले उनसे डिस्कस करूँगी कि अब आपका क्या ख्याल है, साल गुजर गया, शुड आई नॉट. ही माइट कम बैक एंड से कि ज़ारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को अगर तुम बढ़ाती हो तो वो एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है बिकॉज दे स्टिल वांट टू कम एंड मे बी दे कांट अफोर्ड इट. सो यू नो दीज थिंग्स. सो ही सॉर्ट ऑफ लाइक अ केयर टेकर ऑफ योर प्रैक्टिस and the clients that are reaching out to you. Like at times someone got in touch with me who was not my client and said I'm suicidal, and this gentleman reached out to me on a Saturday, and I was not in Islamabad. And so I remember then I reached out to my supervisor कि I'm feeling so much right now कि अब मैं नहीं हूँ और जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है. So he helped me to see through that कि you know stop playing God. You'll just have to sit with the anxiety of not knowing whether something happened or something did not happen. So इस तरह ये सवाल आप ज़रूर पूछें कि आप कि जिस थेरेपिस्ट के पास आप जा रहे हैं कि आपका सुपरवाइज़र कौन है, राइट, और आपकी क्या ट्रेनिंग है. सो ये इम्पोर्टेंट है. हाँ, फिर दैट वे यू कैन हैव सम कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट एंड दैट कैन हेल्प यू. ये आपकी एक्सटर्नल चीज़ों को आप एटलीस्ट मैनेज कर लेते हैं और बाकी जस्ट टेल योरसेल्फ आई एम गोइंग टू गो फॉर 1 सेशन ओनली एंड आई एम गोइंग टू सी हाउ आई फील. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लॉट ऑफ टाइम्स पीपल फील बिकॉज देखो जो आपकी ज़िंदगी में आपका एटीट्यूड लोगों के साथ होता है ना वो आपका थेरेपिस्ट के साथ भी आता है. सो एग्जाम्पल इफ़ यू समबडी हु ब्लेम्स योरसेल्फ फॉर नॉट डूइंग वेल इन रिलेशनशिप्स, you go for a first session and you're not feeling any connection with your therapist at all, and you come back thinking you know therapist तो बहुत अच्छी थी, मेरी फ्रेंड ने कहा था कि she is really good but I didn't feel connected, ये भी मेरा ही कसूर होगा. And then you're not going for the second session. So don't go to the therapist, ask the same therapist to refer you out to someone else, क्योंकि इतना ये ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है कि कुछ ना कुछ होगा तो आप आगे जाएंगे. और साइकी इतनी स्मार्ट है कि उसको पता है कि ये जगह सेफ है कि नहीं for me to put my guards down. Right. Sometimes somebody with maybe not so many certificates or diplomas or whatever can still be such an important space for someone. So it is okay even if you do therapist shopping for a bit, that's all right. हाँ, okay. So building up on that a little bit, so देखिए जैसे आपके जो मेन स्ट्रीम मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं तो आपको होता है कि अच्छा मुझे कोई लाइक पीरियड्स में यूट्रस में इशू आ रहा है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, पेट में आ रहा है तो जो है किसी गैस्ट्रो के पास चले जाऊँ. बट एंड यू नो वो अंडरस्टैंडिंग है लोगों को उन टर्म्स की, बट ज़्यादातर लोगों को साइकोलॉजिकल टर्म्स और स्पेशलिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती. सो यू आर जस्ट लाइक, so sometimes when I think of okay I need to reach out to a therapist, I don't know what kind of therapist is good for me. So that's a very difficult, I think वो एक step है जो also it serves as sort of like an obstacle in taking that step कि who is the right therapist for me. So that is a very good question. See, so a lot of times I'll also get calls and somebody will ask me कि can you work with someone with anxiety and depression, so they confuse कि कोई speciality. So psychotherapist जो होगा ना वो ये इन सारी चीज़ों को डील कर सकता है, जिसमें ट्रॉमा आ जाता है, जिसमें मे बी सेक्शुअल अब्यूज़ की हिस्ट्री है, जिसके अंदर आपकी कोई ग्रीफ थेरेपी है. पाकिस्तान में ये एक लार्जर टर्म ही है एंड मोस्ट ऑफ अस आर ट्रेन टू वर्क विद ऑल ऑफ दिस. लेकिन अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, मुझे जब कोई रीच आउट करके कहते हैं कि जी शिज़ोफ्रेनिया है या साइकोसिस है, आई एम नॉट ट्रेन टू डील विद दैट. सो देन ऑफ कोर्स आई रेफर देम आउट टू अ साइकियाट्रिस्ट बिकॉज देयर आर मेंटल डिसऑर्डर्स, देन देयर आर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, एंड देन देयर आर issues that we have as a product of the life we have had, and then we feel anxious and depressed, we have physiological issues, maybe trauma है, loss है, grief है. उसके लिए just reaching out to a therapist is enough because they are trained to deal with all of this. तो उसके लिए आपको स्पेशली, क्योंकि जैसे CBT का आपने सुना हुआ है, अब CBT इज़
So sure, but I don't know, like it's just one way of dealing with it, but I don't find that it's enough to deal with these issues, जिसमें anxiety, depression, ये सब तो manifestation है ना, जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, relationship problems हैं. So just a therapist, जिसमें आप बात, you can ask them. वही बात है कि पूछा जा सकता है. हाँ. तो specialization इतनी है भी नहीं इसके अंदर, जो at least पाकिस्तान में नहीं है. Okay, so you can basically reach out to any therapist, of course, and they yeah. will most likely be able to solve your issues. Yeah. So for example, देखिए बाहर तो अगर आप गूगल करो तो there are sex therapists who just dealing with that problem within relationships. There are grief therapists, there are trauma informed therapists, because ज़ाहिर है वो दुनिया में हमारे से बहुत आगे हैं. यहाँ जब आप जाते हैं MBBS डॉक्टर जो होता है वो आपके हर मर्ज का इलाज भी आपका वो भी कर देता है, स्पेशलिस्ट अगर ना भी हो. तो पाकिस्तान के एक लिहाज से ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम शायद हमारा कल्चर ऐसा है, ये सोसाइटी ऐसी है कि हम ज़्यादा शायद सीख लेते हैं और हम somehow across the board we're able to deal with things. I noticed that over here because when I worked with some people from UK, maybe other therapists, and हमेशा से like our Pakistani therapists were able to stand out, and our understanding of lot of things were far more advanced than their specialized training as well. Right. So for example, when I'm dealing with relationship counseling, then of course I'm doing sex therapy within it, and I'm working on emotional intimacy and other issues as well, even without specific training as such in it. Okay. Yeah. Do you think everyone should get therapy? Because look, अब तो ये हो है ना कि everyone should get therapy. 100%. Why? Because see, people think you need to have a problem and then you need to go to therapy. So therapy is not just problem solving, because at the end of the day, for example, if a client who's come to me who's lost a father, I can't do anything about that, right? Or somebody who's having financial problems, I can't do anything outside of that room as far as the real life problems are concerned. But therapy की understanding जो है ना वो है कि आपको जानने का मौका मिलता है. और मेरे ख्याल में हम सब without and of course हम ज़िंदगी में कई दफ़ा some people have that insight or instincts and that openness about them which might be inborn, जिसमें वो they're able to absorb things which is happening around them. So for example, I feel that 2-3 मैसेज लोगों को जानती हैं जिन्होंने थेरेपी नहीं भी ली, लेकिन उनमें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो अपने आप के बारे में सवाल करना भी जानते हैं और जवाब ढूंढने की कैपेसिटी है. लेकिन मेजॉरिटी में वो नहीं है. मेरे में तो बिल्कुल नहीं थी. मेरे में एंजाइटी भी थी, मेरी बहुत सी चीज़ों के बारे में मुझे जो अब पता चला है मुझे उस वक्त नहीं पता चला. तो क्यों आपको थेरेपी में जाना चाहिए कि यू कैन लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ. इट्स अबाउट अवेयरनेस फर्स्ट ऑफ ऑल, and then awareness can lead to experience, and experience means, so for example, if I was someone who couldn't say no to people and I was a people pleaser, hypothetically speaking, so what will therapy do for me? First of all, I'll understand कि मैं ये कहाँ से मेरा ये habit कि मुझे नो करना मुश्किल है. आई अलाउ पीपल टू वॉक ऑल ओवर मी. मुझे लोगों को प्लीज़ करने का दिल करता है. अब आपकी थेरेपी के जर्नी के थ्रू आपको जब समझ आ जाएगी, तो देयर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मी दैट वाज सॉर्ट ऑफ साइलेंट दैट डज हैव द कैपेसिटी टू बी असर्टिव. सो व्हेन माय थेरेपिस्ट एंड थ्रू द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप दैट पार्ट स्टार्ट्स टू वेक अप एंड बिकम्स बिगर, then I will start experiencing it in the world. But I'll keep coming back to my therapist and say, look, I felt very anxious when I said no to someone, and then I need that reassurance from someone, that I need that validation. It's literally like a child that grows through the journey of infancy to adulthood. कहीं ना कहीं आप एक पेरेंट इन रूम भी होते हैं जिसमें वो एडल्ट, मुझे बहुत दफ़ा फीलिंग आती है कि मुड़ के देखता है कि डू यू थिंक आई एम डूइंग इट ओके, जैसे बच्चे मुड़ के देखते हैं ना कि मुझे तो देख रहा है कि नहीं देख रहा. सो आपकी अवेयरनेस एक्सपीरियंस में आएंगी, एंड दैट्स हाउ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सो आई डू बिलीव कि 9 out of 10 people do not have complete understanding of themselves, and all of us have blind spots. हमें नहीं पता कई दफ़ा चलता कि हम लोगों के इम्पैक्ट कैसे करते हैं. तो आपको थेरेपिस्ट तो एक बहुत ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ बताएगा. इस थेरेपी इज नॉट अबाउट अ पर्सन सिटिंग एंड टेलिंग यू यूर अमेजिंग पर्सन एंड जस्ट रीअश्योरिंग. It's not just validation. Not at all. I mean, life. I've had sessions when I've been so challenging and I've given feedback to men sitting across me that, look, this is, you're objectifying women right now, and here I am, and this is how you're impacting me. And some of them have changed that attitude. And I've done the same. So it's really becomes a place where you can know कि मैं किस तरह लोगों को impact करती हूँ या करता हूँ. And awareness तो हम सबकी लैक करेगी बिकॉज हमारे कल्चर में नहीं है. सो आपके सवाल का एक और जवाब ये होगा कि देखिए जो हमारे पेरेंट्स हैं, कितने पेरेंट्स को वो ये अंडरस्टैंडिंग भी थी या हमें वो स्पेस मिलती थी टू फील एंड टू एक्सप्रेस. आई हार्डली हैव एवर कम अक्रॉस एनीबडी हु
sit down with a child and beyond a certain question, normally क्या होगा कि चोट लगेगी और फ़ौरन कहेंगे अच्छा ठीक है, let's go get you McDonald's, and you want to just shut that down. So our culture is not such where we are कम्युनिकेशन ही नहीं है. कम्युनिकेशन ही और पेरेंटिंग, हमारे पेरेंट्स भी तो प्रोडक्ट ऑफ देयर पेरेंटिंग. सो वो फंक्शनल पेरेंट्स आते हैं, ऑफ कोर्स दे फिजिकली एक्सप्रेसिव एंड दे लविंग, बट दे नॉट रियली हैविंग प्रोवाइडिंग द कनेक्शन एंड प्रोवाइडिंग द स्पेस टू द चिल्ड्रन वे दे कैन से हम बुरा फील कर रहे हैं बट हमें ये नहीं पता कि क्यों फील कर रहे हैं. पेरेंट्स कहेंगे इसकी वजह बताओ ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, फिक्स कर सकें. सो इसलिए हमारे कल्चर में बहुत ज़रूरत है कि ख़ास तौर पे मुझे लगता है. इंटरेस्टिंग. आई थिंक एट दिस पॉइंट आई वांट टू से कि पेरेंटिंग में एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो हमारे कल्चर में सिर्फ, बट व्हाट वी टेंड टू डू समटाइम्स एज पेरेंट्स इज़ when children come to us with their issues, we are very quick to just finding a solution for them, first just solving it, like you said, functional, rather than sort of sitting and unpacking what happened and validating their like of course emotions, or like just giving them a space to feel and to feel. Yes, it's like okay, let's solve it. और मैं देखें, मैं कहती हूँ कि आपको आप थेरेपी से आपकी कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको कितनी चीज़ों की उलझन हो रही होती है और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है. आपकी फॉर एग्जाम्पल मुझे उस दिन आई वॉज रीडिंग समवेयर कि यू नो व्हेन चिल्ड्रन कम फ्रॉम स्कूल, मदर्स नॉर्मली से हाउ वाज योर डे, एंड इट वाज सच अ नाइस आर्टिकल विद द साइकोलॉजिस्ट सेड कि इट्स टू बिग अ क्वेश्चन टू आस्क योर चाइल्ड, यू शुड आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. सो व्हाई नॉट, मतलब वी आर स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन, व्हाई नॉट स्पेयर दैट आवर every week for yourself where you will get to know more about yourself. Yeah, that's true. That makes sense. So what I'm getting is that you're saying that therapy jo hai, it's basically a work inside your mind, and it's going to obviously, and that I think impacts your circumstances in absolutely ways that can make big changes. So it's like small internal changes. Yeah, a lot of time people feel ke, you know, the way they ask me a question, I can sort of see कि they're talking to a doctor and they don't understand कि doctor therapist से फ़र्क है, because they'll say कितनी देर लगेगी, 6 months में ठीक हो जाएंगे हम 4, तो वो उसको भी उनको वो माइंड शिफ्ट भी लाने में थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं, दिस इज़ अ प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम. एंड हाँ, आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दैट पीपल हैव. इट्स समथिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. यू नो, अर्लियर यू वर आस्किंग मी बैक इन 2014 में जब मैंने प्रैक्टिस फाइनली अपनी इंडिपेंडेंट की थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये खौफ होता था कि हाउ द हेल एम आई गोना गेट क्लाइंट्स, लाइक आई हैव डन ऑल दीज ट्रेनिंग्स एंड मुझे नहीं लगता कोई मेरे पास आएगा. नाउ माशाल्लाह every day I'll get calls and people from all walks of life. So there is a shift that's coming, and I see a lot of hope and open conversations around mental health. तो mental health की बात करते हैं. ठीक है. So mental health क्या होती है, and what makes someone mentally healthy or sort of unstable or unhealthy? आई थिंक देखो, मेंटल हेल्थ कैन अगेन फ्यू थिंग्स दैट कम. एक तो नॉर्मली मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ से लोग एसोसिएट उस चीज़ को कर, नॉर्मल का जो वर्ड यूज़ किया जाता है, मैं तो नॉर्मल हूँ, या कहा जाता है कि नहीं, आई एम एबनॉर्मल. एबनॉर्मेलिटी को नॉर्मली एसोसिएट किया जाता है विद मेंटल डिसऑर्डर्स. किसी को शिज़ोफ्रेनिया है, किसी को साइकोसिस है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है, बाइपोलर है. सो जब मेंटली अनहेल्दी कहा जाता है तो एक उसको उस बॉक्स में डाल दिया गया है कि अगर आपको वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं तो आप मेंटली अनहेल्दी हैं और आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए. लेकिन एक overall, generally, when I say, are you a mentally healthy person, I think just the fact that you can start to know about yourself, you can understand कि my body is suddenly feeling anxious. मैं अपनी ज़िंदगी में, for example, लोगों को डिप्रेशन है, लोग लो फील कर रहे हैं, पैनिक अटैक्स फील कर रहे हैं, then you're not mentally healthy, right? So at times, lot of physiological problems जो हम पहले बात भी कर रहे थे, gastric issues कितने सारे होते हैं. So that's not a body issue, that is a mind issue. Yeah, someone keeps telling me I have gastric issue. I'm like, listen, this is, you need like it's something exactly psychological. Yeah. Absolutely, because अब तो research यही है कि 9 out of 10 diseases are rooted in your psyche. Yeah. Because body mind and body separate नहीं है. So mentally healthy person would be somebody who's bodily healthy and happy as well. And then mentally also, if you're not feeling conflicted all the time, आप anxiety नहीं feel कर रहे, आप depression तो again
इज इट इलनेस, लेकिन अब हम उसको सैडनेस से रिप्लेस करके नॉर्मली व्हेन पीपल से आई एम डिप्रेस्ड, यू नो, आई थिंक इट्स बिकम लाइक अ लिंगो. Yes. अदरवाइज डिप्रेशन तो एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल आई एम फीलिंग लो एंड आई एम फीलिंग सैड, सो आई वुड एक ऑटोमेटिकली लोग कहते हैं फीलिंग डिप्रेस्ड. सो अ मेंटली हेल्दी पर्सन वी विल होपफुली हैव लेस फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एज वेल, एंड इट्स अबाउट फीलिंग सेटल विद इन योर सेल्फ. आई थिंक अ मेंटली हेल्दी पर्सन इज नॉट जस्ट अबाउट द माइंड, बट आपके अंदर एक सेंस ऑफ सेटलमेंट होती है वे यू फील I'm at okay. harmony and at sort exactly, of peace. at harmony with yourself and harmony with the environment as well. So for example, if you are getting triggered again and again by a loved one, or as a mother you're feeling overwhelmed and you're unable to cope, so there is something that needs to be addressed. So it's not just harmony with the self, but also with the environment. Because हमारी ज़िंदगी में triggers आने हैं, illnesses की शक्ल में आने हैं. कोविड था, अभी डेंगी है, माशाल्लाह political, तो let's not even go there, how triggered we are at the moment. So there are so many external factors. So am I in harmony? And by harmony, that doesn't mean that I'm happy with what is happening around me. But do I have that sense of groundedness and containment within myself to handle those problems from a responsive space and not a reactive space? Right. Am I able to, do I get really shaken up and react? Bilkul, or am I able to like respond? sit in a calm space and respond to it in a thoughtful manner? I think it's, I've recently, figured out, I won't say I've figured out, but I've thought about that maybe the more mindfully you are able to live your life, the more sort of mentally stable you are. Consciously aware ho. Yes. So for example, even if you're triggered, so mentally healthy doesn't mean that you're never going to get triggered. Yes, if I've been in therapy for almost 10 years, that does not mean that I don't get triggered. But the difference is, most of the times I'm able to ground myself. And sometimes even when I'm reacting, I know I'm reacting, and that's awareness. So it's like I can zoom out and I can see, okay, you are getting triggered. And then again, what my attitude towards that trigger is that I'm not going to put myself down for it. You know what? And at one point I did do that, because I used to feel कि इतने घंटे 50,000 घंटे तुमने therapy में ले लिए, तो how come you're still getting triggered? And then the self-abuse would start. So then again I worked on that कि no, it is okay to get triggered at times, because trauma जो होता है आपकी body ने भी internalize कर दिया, आपके mind ने भी कर दिया है, तो आपका इतने सालों का undo करने में it's a lifelong thing. So it's not possible कि हम अपने environment से trigger ना हो. Okay, so one question that I want to ask you, कि trauma जो है वो, what exactly is trauma? And they say कि, because so a lot of people think कि अच्छा life में कभी कुछ हुआ and then we, like now I'm living my life and I'm moving on. But they say कि trauma gets stored in your body, जो हमने illnesses वाली बात भी की थी, I think उससे align होता है. Is that true? And how is that resolved through therapy maybe? Yeah. So I think trauma, like you were discussing earlier, of course trauma is simply defined as a traumatic event which can be a loss of a loved one. It can be for example, people with PTSD जो war में जाते हैं, post उनको traumatic disorder start हो जाता है, sexual abuse है, physical abuse है, violence है, this is all comes under the realm of trauma. But I have sort of a personal definition for it as well. I've seen it in my work as well. Sometimes a single event where in school you were bullied, or maybe your parents preferred your sibling over another, you did not have space to talk about what you wanted to talk about with your family. For example, a common question I ask every client is when you were young and if you needed to be, have some sort of comfort या कोई परेशान चीज़ करती थी, who was your go-to person? So बहुत से कहते हैं कि अम्मी थी या कहेंगे अब्बू, लेकिन काफ़ी सारे हैं जो कहते नहीं, we somehow knew कि हम नहीं कह सकते. So that's trauma as well. And so that's your classic introvert who kept it in for years and years, and finally it became too much and it became anxiety or a panic attack or became depression, and they end up going to therapy. So what does therapy do? See, initially of course trauma can be resolved कि आपको सबसे पहले तो एक safe space मिलेगी जो completely आपको कभी safe feel नहीं होगी. By the way, ये भी एक myth है कि therapist के साथ आपकी complete safety feel होगी. आप 3 साल एक client के साथ काम करते हैं और अब वो client समझता है कि भाई बहुत important उस therapist के लिए मेरी 3 साल की journey है, और फिर एक हफ्ते में जिसमें उसको एक emergency session चाहिए होता है और मैं कह दूँ कि मैं नहीं कर सकती बिकॉज मैं अनअवेलेबल हूँ, द सेफ्टी बिकम्स अनसेफ इन दैट मोमेंट एंड दिल बी टर्मिनेशन पोस्ट दैट. सो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना कि कोई रिलेशनशिप जो है ना उसको हम आइडलाइज कर देते हैं, हम कहते हैं आई कम्प्लीटली ट्रस्ट यू एंड यू कम्प्लीटली सेफ. दैट्स नॉट ट्रू. एंड कमिंग बैक टू द ट्रॉमा थिंग, तो इनिशियली तो एक
ऑलमोस्ट ऑप्टिमल सेफ्टी आपको मिलेगी अपने थेरेपिस्ट के साथ कि आपको कोई आप अपने सीक्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल जो विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ है उनको तो वो एक इतने सालों के बाद वो जगह मिलना कि दे कैन शेयर इट विद अनदर पर्सन एंड इट नो लॉन्गर इज अ सीक्रेट दैट दे हैव टू कैरी ऑन देयर ओन इज हीलिंग, राइट? दैट्स हाउ द ट्रॉमा स्टार्ट्स टू बिकम रिजॉल्व. एंड देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. कितने सारे लोग हैं जो सेल्फ ब्लेम करते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ में. लिटरली 9 out of 10 टाइम वो एडल्ट समझते हैं कि क्योंकि हमने बताया नहीं, और हम बता तो सकते थे, सो हमारा कसूर है. सो उसमें फिर रेजोल्यूशन में सब कुछ आ जाता है. आपकी हीलिंग इससे भी आती है कि आपका कसूर नहीं था, आपके अपने साथ अंडरस्टैंडिंग क्या थी, फिर उस ट्रॉमा ने आपकी प्रेजेंट लाइफ में कैसे इम्पैक्ट किया है. एक अगर जैसे मैंने आपको बताई थी कि आज जो आर्टिकल मैंने लिखा अबाउट मेन हु आर हरासिंग women all the time and sending these obnoxious messages, and suddenly, you know, yesterday I was thinking that somewhere there's a little lost boy inside who wants validation from this female figure, and the manifestation of that need for validation and visibility comes in ways that is a product of their life. सो अगर एक बॉय है या लड़की है जो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हुई है, तो उसका एक रिएक्शन होगा कि वो ओवर सेक्शुअलाइज हो जाएगी, और दूसरा होगा कि वो बिल्कुल उस चीज़ से हट जाएगी. सो हम हैं तो प्रोडक्ट ऑफ आवर यू नो आवर चाइल्डहुड स्टोरीज, एंड वी ऑल राइट दिस स्क्रिप्ट्स फॉर आवर सेल्व्स, एंड if we have had trauma, then that's a traumatic script that we've written. Yes. So through therapy we can write a new script and a new way to be. Yeah. Okay, so I feel like most of the people that are seeking therapy, they are victims of जो आते हैं किसी trauma के बाद और उसमें, so they're victims of some kind of abuse or an incident or something that happened to them, and they're coming to heal from those incidents or those things and recover. And but मुझे ऐसा लगता है कि you know, like how much are we talking to the abusers, and how many abusers are coming in because they need the fixing, right? They really need that fixing as well. And does that happen that sometimes people who come as victims themselves happen to be the abusers? So I have worked with abusers as well, who were the abusers and not the one that were abused. I think ये couples therapy में होता होगा काफ़ी. I think हाँ, couple therapy में बिल्कुल है, जिसमें कुछ लोग आते हैं जिसमें domestic violence होती है. लेकिन मुझे ये लगता है कि जो इंसान थेरेपी तक आ गया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने आप को जानने की ये कि आप अपने डिफेंसेस नीचे करके किसी और का ओपिनियन सुनने को तैयार हैं. तो मैं हमेशा whenever there is a male client that I get, I feel half my work is done, because this man is okay to sit before a woman and allow her to comment on her and analyze her or give him feedback or whatever that is, right? So firstly, you know, fixing is not a word I would want to use, but I would say कि healing से पहले therapy is about understanding yourself. So yes, I have worked with a few people who were abused themselves as children, and then they became abuser. And I'm glad that I got an opportunity for us to work through that, and they definitely made different decisions. They carried a lot of remorse. A lot of them got into drug addiction, but they were able to get out of it. Because at the end of the day, abuser भी कौन बनेगा? मतलब अगर आप हर इंसान के सामने जब थेरेपी में बैठती हूँ तो उसकी जब कहानी सुनो तो आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है. Because everybody is human, right? Yes. So अब्यूज़ का मतलब है कि आपने बाउंड्रीज नहीं सीखी. अब हमारी जो सोसाइटी है उसमें बाउंड्रीज कहाँ हैं? फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है. लोग नो नहीं सुनना चाहते. समथिंग सो सिंपल एज व्हेन आई गेट अ कॉल व्हाइल आई एम ऑन एन ऑनलाइन सेशन एंड वो मैं अपने आईफोन पे कर देती हूँ, आई कांट टॉक राइट नाउ. उसके बाद ही माशाल्लाह कम से कम 5-6 कॉल्स आती हैं. छोटी छोटी चीज़ों में रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज, नो सुनने की आदत नहीं है. देयर इज दिस एंटाइटलमेंट दैट ऑल ऑफ अस हैव, एंड men and women both, by the way, not just men. We do talk a lot about, yes, it's true that we come from a patriarchal like society, there's misogyny, but women also have their own ways of abusing. Yes, absolutely. Okay. Yeah. So how do you think, because you said that you've had people who were abused and then they become abusers, how does that happen actually? सी वही बात है जैसे मैंने जो पहले कहा कि आपकी कहीं ना कहीं देखो अब्यूज़ में एक सेंस ऑफ वायलेंस भी है, एक सेंस ऑफ पावर है जो आप फील करते हैं कि मैं दूसरे पे जोर आजमाई कर सकता हूँ. कंट्रोल कौन करना चाहता है या पावरफुल कौन होना चाहता है? जिसने हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस की हो. सो जिसने हेल्पलेसनेस ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की होगी वो जो उसको फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके अंदर वो इन कंट्रोल फील कर सकता है और वो पावर फील कर सकता है, बिकॉज पावर इज़ वन साइड ऑफ द कॉइन एंड हेल्पलेसनेस इज अनदर. एंड वी एज ह्यूमन बींग्स जस्ट imagine how helpless we are really.
something that I worked on and in my personal journey is to surrender to the helplessness that I have when it comes to well-being of my loved ones. मुझे नहीं पता कि फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग समझते हैं कि जी सारी पावर थेरेपिस्ट के पास है और क्लाइंट तो बस बेचारा क्लाइंट एट टाइम्स क्लाइंट्स हैव आस्क्ड मी एज वेल कि एक हेल्पलेस उनको फील होती है और मैं हमेशा कहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे you guys can walk out of this room and then you can never show back, and I might send one message to check up if you want to come in next week. Other than that, I've come across so many unfinished stories in my life, and at times it's very overwhelming कि जो इंसान मेरे पास 2 साल के लिए आ रहा था, मुझे अब नहीं पता कि फिर वो उस बारे में जिसमें हमने बात की थी क्या हुआ कि नहीं हुआ. So इसी तरह एब्यूज़र जो है वो वही है जिसने हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस की है और फिर वो उसको जहाँ मौका मिलता है वो कंट्रोल करता है. वो एक वायलेंट हस्बैंड बन जाता है, वो एक एब्यूसिव हस्बैंड बन जाएगा, वो अपने he'll become an arrogant boss, he'll become. अब नार्सिस्टिक डिसऑर्डर के बारे में लोग बहुत नार्सिज्म के बारे में बड़ा कॉमनली अब यूज़ किया जाता है टर्म. ही इज़ अ नार्सिस्ट एंड शी इज़ अ नार्सिस्ट. उसके पीछे भी नार्सिस्टिक इंसान वो होता है जिसकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो होती है, बट वो अपने प्रेजेंटिंग सेल्फ ऐसा रखना चाहता है कि अगले को पता ना चले कि अंदर से कितना कमज़ोर हो. एंड आई थिंक जस्ट टू ऐड टू दैट, बिकॉज मैनी पीपल होपफुली विल बी लिसनिंग टू दिस, के in this generation I've noticed, like the 20s and 30s clients that I come, कि बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं जो आप डायग्नोज किए बगैर आपको नहीं किसी को कहना चाहिए, वो कॉमनली अपनी रिलेशनशिप में यूज़ करते हैं. माई गर्लफ्रेंड इज़ अ नार्सिसिस्ट, माई बॉयफ्रेंड इज़ बाइपोलर, एंड इट अम्यूजेज मी एंड आई ऑल्सो लाइक टू चैलेंज इट कि वी हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू स्पेशली सम पीपल हु स्टार्ट टू अंडरस्टैंड थेरेपी या वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हैं. उस चक्कर में थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो गूगल करके 4-5 टर्म्स को वो दे होल्ड ऑन टू इट लाइक बाइबल, लाइक होली grail or something, and then they just use it very carelessly. So this is something I think this generation needs to be mindful of. Yeah, it's not that simple, right? Like you said, the human mind is so complex, and it's so judgmental, and you don't expect to be judged. And narcissism is not something that you can just एक certain behavior पे वो Google में 8 चीज़ों में से आप 2 के ऊपर करके आप उस इंसान को मत लेबल करें. Just because somebody is moody doesn't mean that they have bipolar disorder. So ये थोड़ी सी मैंने नोटिस किया है कि जो मेंटल हेल्थ के बारे में आप बात करते हैं और वो एक्साइटेड है और वो जानना चाहते हैं, विच इज़ अमेजिंग, मगर उसमें थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड भी आ जाता है. नॉट एवरीबडी बट अ फ्यू. चलें कपल्स थेरेपी के ऊपर बात करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि पाकिस्तान में ना कपल्स थेरेपी का तो कॉन्सेप्ट बहुत कम था. लाइक देयर इज़ नो सच थिंग. इट्स आइदर लाइक यू लिव इन एन अब्यूसिव मैरिज फॉर एवर और you eventually like leave. And it's not even about an abusive marriage, could just be an unhappy marriage. There is no concept of going to a therapist to figure out भाई हमारे साथ मसला क्या है and can we fix it, because I feel like when 2 people are in that situation it's very hard to be objective and it's very hard to see 100%. the other person because you are involved so emotionally and mentally into it, and then other factors like especially Pakistan में joint family systems, बच्चे, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, like there's so much involvement. How do you sort of put yourself out of it and 100%. figure out कि problem क्या है? True. So I want to ask you कि पाकिस्तान में couples therapy में ज़्यादातर आपके पास जो इश्यूज़ आ रहे हैं इस वक्त वो किस तरह के आते हैं? थोड़े बहुत मेरे पास कपल्स वो आए जो कि अभी रिलेशनशिप में हैं और वो सोच रहे हैं उन्होंने शादी करनी है कि नहीं करनी, या वो रिलेशनशिप में और उसको लेके वो आए हैं. और मुझे ये लगता है कि आप शादी से पहले आ जाएं तो बहुत अच्छा है, बिकॉज हाँ आई थिंक एवरीबडी हुएवर इज़ थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, और इवन इफ यू गेट टू नो समबडी एंड देन यू गेटिंग सीरियस अबाउट इट, हैव अ फ्यू सेशंस बिफोर यू डिसाइड टू इवन एम्बार्क ऑन दैट जर्नी. एक बात इश्यूज़ के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस भी आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है बिकॉज कम्युनिकेशन करने का तरीका नहीं आता. बट I'll simplify it for you and I'll put it in a nutshell. Why does the honeymoon period gets over? And why does every couple have a problem? See, so according to the psychology of human being, a lot of psychoanalysts और psychologists believe कि हम 3 internal states में operate करते हैं. एक हमारी parental state होती है, एक हमारे अंदर हमारी child state है, inner child की बहुत बात की जाती है, और एक हमारी adult state होती है. ठीक है. So 4 साल के आपके 1.5 साल के बेटे में भी parental state होगी जिसमें वो हो सकता है ऐसे उंगली करके कहें कि no mama you need to listen to me. But that, you know how parents talk. Yes. And then I have a child state where I might spontaneously want to get up and dance, so that's my child state. Or might even be
acting out at times and becoming difficult, and you'll hear your spouse saying कि क्या यार बच्चों वाली बात कर रही हो. So that's you actually in your child state. Okay. When two people get married or they are in a relationship, so first of all I believe कि most likely unconsciously वो realize करते हैं, जिसको वो love कहते हैं, कि कुछ ना कुछ हमारे दरमियान में significant है. So and there is a want for safety. When they come together after a few weeks or a months, आपके गार्ड्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं. जब गार्ड्स नीचे आते हैं तो जो अंदर की इनर चिल्ड्रन है, दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द अदर वन टू बी द पेरेंट and compensate for the childhood trauma. So जिसको daddy issues कहते हैं, mommy issues कहते हैं. For example, if there's a girl who saw her father to be an absent father, and now she meets a guy who's available, and the relationship is that's why she was attracted to him. But a few months later, when the other one is obviously साथ रह रहे हैं, he might not be available, सारा वक्त टाइम नहीं दे सकते. Real life हो रही है. तो adult तो समझ सकता है इस बात को कि यार इस वक्त available नहीं है, लेकिन वो अंदर की बच्ची जिसने 20 साल का वैक्यूम फील किया है, तो वो चाइल्ड लाइक नीड्स अभी भी आ रही हैं और वो प्रोटेस्ट आ रही है, जिसके अंदर वो हस्बैंड मुड़ के कहेगा कि यार तुम्हें पता है मैं अगर कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, तो एडल्ट को समझ आता है और एडल्ट शेम फील करेगा, बाद में अपोलोजाइज करेगा, लेकिन वो एडल्ट खुद भी कंफ्यूज है कि मेरी इतनी ज़्यादा नीड क्यों है. वो चाइल्ड के वैक्यूम कि मेरा दिल तो चाह रहा है, समझ भी आ रही है, लेकिन मेरा दिल भी चाह रहा है. होता है कि रिलेशनशिप में हम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास की हीलिंग अपने सिग्निफिकेंट अदर से चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ मेल विल से यू बिकम द मॉम दैट आई डिड नॉट हैव, यू नीड टू बी नर्चरिंग. एंड बहुत दफ़ा हम अनकॉन्शियसली ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं अपनी शादियों में, अपने रिश्तों में, जो उसी तरह के होते हैं जैसे हमारे अपने पेरेंट्स थे. आपकी your mother was abusive, you end up finding a man that was abusive as well. But actually unconsciously why you go for someone like that is because there's a fantasy inside कि my mother could not change, but this man will become different from how and that means I can be different. She did not love me and she never changed, but yes, he is a lot like her, but maybe he will become different from how he was originally as, and that's healing for the child within. It's really complicated. It's really complicated. Yeah, I understand. But yes. every relationship में ये journey आती है जिसमें you act out your childhood traumas and you want your significant other to compensate. Yeah, for so you're looking for a parent-child sort of relationship. बिल्कुल. और आप confuse हैं, और इसलिए बाद में जैसे कई दफ़ा adult remorse feel करेगा कि I'm really sorry, I don't know what came over me. मुझे नहीं पता मैंने इतना react क्यों किया है. So एक जो क्यू है ना, जिसका मतलब जिससे आपको पता चले कि मेरे कोई unprocessed trauma मेरे रिश्ते में आ रहा है, वो ये है कि एडल्ट हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन को. रिस्पॉन्ड का मतलब करने का मतलब है कि अगर आप इस में से कोई ऐसी बात करें जो मुझे अच्छी ना लगे, सो आई पोलाइटली से कि ओके, हम ना आई हेयर यू बट आई थिंक इट्स अ बिट ऑफेंसिव एंड आई यूज द सेम टोन आई एम स्पीकिंग राइट नाउ. ऑन द अदर हैंड, इफ आई बिकम रिएक्टिव एंड आई स्टार्ट becoming aggressive and I'm like, what the hell are you talking about, and I decide to walk out, that means there is unprocessed trauma and I'm transferring my feelings that I have for someone else onto you. So that's the cue for you कि आपका ट्रॉमा इस वक्त आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है और उसको it's a threat for your current relationship. Right. And your spouse or your significant other cannot compensate for the loss that you had. A lot of women, a lot of men who were abused by their abused as children, they will have, for example, intimacy issues when they're married. अब उसमें the significant other can make it personal and they might feel कि यार मैं boundaries भी respect कर रहा हूँ, my wife just doesn't want to be intimate with me or my husband just doesn't want to be intimate with me, and they feel क्या वजह है, फिजिकली अट्रैक्शन है, हमारी शादी हुई थी. अब उनको नहीं पता कि कहीं ना कहीं अंदर का चाइल्ड जो अब्यूज़ हुआ है और वो उस तरफ नहीं जाना चाहता. सो वो ब्लाइंडली हम अपने ट्रॉमास को बार बार रिश्ते में एक्ट आउट करना शुरू कर देते हैं एंड देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. यस, एंड आई थिंक विद थेरेपी व्हेन यू कैन स्टार्ट आइडेंटिफाइंग, देन यू कैन वर्क टुवर्ड्स the best of marriage or best of relationship will have those certain things that are playing out in weird ways. So I believe again I think आपको कुछ सेशंस लेके अंडरस्टैंड करना चाहिए कि who am I as an individual, मैं क्या इस सिस्टम में लेके आई हूँ और वो दूसरा क्या लेके आया, और हमारे वूंड्स जो हैं, प्राइमरी वूंड्स कहते हैं, जो हमारी प्राइमरी चोटें लगी हुई हैं, एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं और कैसे एक दूसरे की चोट पे हम पाँव रख रहे हैं ना चाहते हुए भी. राइट, या व्हेन टू पीपल गेट मैरिड दे आर बोथ कमिंग विद देयर बैगेज. बिल्कुल. एंड देयर इज अ फैंटेसी ऑफ feeling safe, but to feel safe you have to
आप अनकॉन्शियसली वैसे ही सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेंगे और फिर आप चाहेंगे यू बेटर नॉट बी लाइक द वन दैट हर्ट्स यू. Now you're like, okay, now I've created these circumstances. Yes. Now you absolutely. Yeah, now you fulfill my expectation. बिकॉज जो आपने कोपिंग स्किल्स बचपन में सीखी, अगर आपने बचपन में ये सीखा था कि मैं अगर चीखें मारूंगा तो मेरी बात सुनी जाएगी, आप वही अपनी एडल्ट रिलेशनशिप में लेके जा रहे हैं. और आप कह रहे हैं दैट वर्क फॉर मी. उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स मुझे टेंशन देते थे, व्हाई इजंट इट वर्किंग विद यू? सो as a therapist, do you see a lot of... And this links back to your original question, why everybody needs to be in therapy, that as parents, as professionals, as people who want to be, because we are as human beings, हमारी सबसे बड़ी नीड एक दूसरे से बिलोंग करना है. तो हम जब रिश्तों में हमने इतनी अपनी चीज़ों को ट्रिगर होते हैं और एक्ट आउट करना है, why not learn about who we are before we involve another person in that space? Okay, I have a question for you. Okay, a lot of people ask me this question. कि what is the right time to have a child? वो कहते हैं कि अच्छा हमारी अभी and a lot of these people are actually people who जिनके रिश्ते हुए हैं या निकाह हुए, एंगेजमेंट हुई, अभी शादी नहीं हुई, लेकिन ना उनका वो शुरू हो गया, स्ट्रेस के टाइम निकल रहा है. सो देर जस्ट लाइक ओ शुड बी लाइक jump into having a child right after shadi. So what do you think is a good time for a couple to have a child? When they what kind of space do they need to be in before that? I think see एक तो ये person to person depend करते हैं. अगर एक a woman who's getting married in the late 30s, so she has that pressure of the biological clock ticking and she wants to have a baby right away. But I think to simply answer you, the fact there are already 2 children in a relationship within the adults, I think bringing another one can be problematic. So have that stability, एक थोड़ा सा ground आप इतना stable करें before you invite, because again आपने अपनी वो positions as adults छोड़ के, आप एक husband and wife छोड़ के आपने parent mode में आ जाना है, which is very overwhelming. तो अगर पहले इतना chaos है और आपके अंदर इतना chaos है जो आप manifest कर रहे हैं अपने रिश्ते में, तो फिर आप उसके अंदर एक और already 2 बच्चे हैं, so 3 is a crowd. Yes. So I would say कि spend those initial months to understand yourself better, have enough stability in your relationship before you have a child. And do you think that no matter how much stability you have, when a child comes into the equation, how does that affect most of course couples? so just imagine कि अगर एक 2 अनप्रोसेस्ड लोग हैं, इनकी शादी होगी, इनको नहीं समझ आ रही कि अपने वो ट्रॉमास को एक्ट आउट करें, तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चा है वो रिलेशनशिप मैनेजर बन जाता है. So many times I hear couples how they are saying now, and सबसे I think important बात है जो fundamentally हमारे कल्चर में कि बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो अब you're using the child, you're actually saying कि now he's going to manage my relationship. उसके सामने हम नहीं बोलेंगे तो हम ठीक रहेंगे, लेकिन हम हर चीज़ को सिर्फ कॉन्शियसनेस पे फोकस करते हैं. Unconscious is, according to Freud, 70-80% of your psyche. So even if when you don't fight before the child, even when you're thinking कि हम घर से बाहर जाके लड़ रहे हैं, आपकी energetic presence जो है इस वक्त इस कमरे में, there's an energy. When I walked in, I saw the blue. Like when you put this mic, I told you I need a bit of distance. Yes. Such a small thing, right? But suddenly I felt it so much in my face. Now this can be a trauma response as well, by the way. Acha. Of course, because I actually felt a bit breathless, and even now I'm not even looking at it too much. Like I felt it's too much in my face. So this can be a past memory. This can be experience which is different from this, but the feeling is the same. Right. And I felt this is too much for me. This is too much in my face. So similarly, आप एक child को एक ऐसे जगह पे लेके आ रहे हैं और आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं बच्चा आ जाएगा तो सब ठीक होगा. और देखिए हम अपने ट्रॉमास को सिर्फ चूज़ थोड़ी करते हैं कि हमने अपने स्पाउस पे मैनिफेस्ट करना है, प्रोजेक्ट करना है. हम अपने बच्चे पे भी हमें पता भी नहीं होता कि बहुत सारी मदर्स जो अब्यूसिव होती हैं, दे आर दोज विमेन हु वर अब्यूज्ड एज चिल्ड्रन. वो इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा एक टर्म है कि हर जनरेशन अगर एक जनरेशन प्रोसेस नहीं करेगी ट्रॉमा, वो दूसरी को ट्रॉमेटाइज करेगी. सो वी एज आई थिंक इन दिस वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हम जो पढ़े लिखे लोग एटलीस्ट हैं जिनको समझ है, वी हैव टू मेक श्योर इट स्टॉप्स एट अस. break the chain. So don't bring a child unless there's some level of stability that you have in your relationship. There is emotional intimacy. For example, if the woman feels that I have no space and I can't talk to my husband about most things, how will it impact the child?
वो फिर फादर कैसा होगा, मतलब you have to be in a good place to have a child. Obviously आपकी good इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, जैसे 3 पिलर्स जो कहते हैं, जिनको मैं नोटिस करती हूँ, 3 सवाल जो मेरे होते हैं हमेशा कपल को, कि आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी कैसी है, इमोशनल इंटीमेसी कैसी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि नहीं. These are the 3 pillars of a good relationship. Okay. And they're all interlinked. Okay. Yeah. So you have to be in a good place. जबकि यहाँ हमारे कल्चर में opposite होता है, you're in a bad place, have a child. And then things will get better. And have they ever gotten better? No, never. No. हाँ. और उसका जो है बेचारा बच्चा suffers the consequences of. क्योंकि फिर आप देखिए, आप एक तरफ वो एडल्ट पहले एक वाइफ या हस्बैंड के रोल में अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, और आप उसको पेरेंट ही बना दिया. So it's like wearing too many hats and you have no idea how to even wear one of them. So slowing down and simplifying our lives is also important. It's also important. Yeah. हमारे कल्चर जो हमारे सोसाइटी में obviously joint family systems हैं, सास बहू issues हैं. Do you get to see any clients like that, and do you think that that's a very big problem in our culture? Yes, almost all the time. I mean, that fact is always there at some point in time, because हमारा सिस्टम ही जॉइंट फैमिली है. नॉट नेसेसरली कि हम साथ रहें, लेकिन हमारी आपस में वो है कि सास ससुर इन सारा कुछ. आई थिंक देखो उसके अंदर अगेन आयरॉनिकली जस्ट यस्टरडे आई हैड अ सेशन विद अ कपल हु हैव द सेम डिफिकल्टी, कि आपने और उनको मैंने यही कहा कि देखो, जो आपके फाइनेंशियल इस वक्त इशूज़ हैं, और आपका अगर ओनली सन है तो वो साथ ही रहेंगे. और उसके ना मेरी थोड़ी सी पर्सनल, आप बिकॉज एज अ थेरेपिस्ट लॉट ऑफ टाइम्स एंड पीपल से कि थेरेपिस्ट के अपने बाइसेस नहीं होते कमरे में. आप मुझे बहुत दफ़ा क्लाइंट कहते हैं, आई एम श्योर यू डोंट जज, एंड आई एम लाइक नो, ऑफ कोर्स आई जज, बिकॉज बट द ओनली डिफरेंस इज आई विल टेल यू इफ आई जज यू. That's the only difference, because I'm going to promise to be transparent. तो मैं ये ज़रूर मैं आपको बता दूँगी. I'm not going to let you think कि I'm okay with whatever you're sharing. Sometimes certain things I hear can be a bit too much for me as well, right? So similarly, मेरी थोड़ी सी जो personal पॉइंट ऑफ व्यू उसमें मैं समझती हूँ कि हाँ, अब ओनली सन है, सर्कमस्टांसेस हैं, इट्स ओके टू लिव विद योर पेरेंट्स, बट अगेन आपका एटीट्यूड उनके साथ क्या है वो इम्पोर्टेंट है. मीनिंग हर इंसान चेंज हो सकता है अगर हम अपने आप को चेंज करें. सो आई वर्क विद द डॉटर इन लॉ, जिसमें वो एक्चुअली नार्सिसिस्टिक सास थी और बहुत अब्यूसिव थी और बहुत बुरी थी, लेकिन उसने अपने पे जितना काम किया उसके बाद वो उनका बिहेवियर चेंज हो गया. तो थेरेपी से रिलेटेड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग समझते हैं कि दूसरा तो चेंज नहीं होगा, मेरे चेंज होने का क्या फ़ायदा होगा. You can change your circumstances by changing yourself. I have changed as a person, and almost every person around me in my intimate relationship has changed. And what is the change? How they behave with me. For example, if somebody is crossing my boundary, and of course that's a lot of work, because you have to stay sort of solid, and एक resistance आती है, बहुत सारे आपको इंट्रोजेक्ट्स आ जाते हैं सोसाइटी की तरफ से, लेकिन अगर आप काम कर लें, हर इंसान चेंज हो जाता है. You know, something so simple as when I joined this class, I know my mother wasn't too much of, like, she used to call me every day and say, आज भी क्लास है, आज भी क्लास है, and I was like, सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा है. तो बहुत रेजिस्टेंस थी उनकी तरफ से. She wasn't okay for me to leave the kids and even take this time out for myself. और आज वो जब मेरा सेशन होता है वो आराम से कहते हैं, ठीक है चलो, when you're done with your work we'll talk. She's completely changed. The same resistance has turned into admiration for my work, and she respects it, and now she flaunts and tells everybody my daughter is a therapist. So she didn't change, she didn't go into therapy, right? I went into therapy and I worked on myself. So if you work on yourself, you can 100% dictate changes in behaviors of other people. Right. Each and every person around you. Right. And I think that makes sense, because the more in control you are of yourself, the more you can control your circumstances and situations, right? You get a more control over your life. बिल्कुल understanding है. Control is one way to, I would say, express it, but yes, it's an understanding. कि for example, अगर मेरी कोई बाउंड्री लगातार क्रॉस कर रहा है मेरे, तो मैं नो करने में मेरी कितनी हिम्मत होगी. और देखो, ये जो ट्रांजिशन होता है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक, थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कि एक पुराने घर से जब हम नए घर में जाते हैं तो हमें पुराने घर को छोड़ने का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है. इट्स फेमिलियर. नए घर में जाने की एक्साइटमेंट भी है. सो विद इन द साइकी देयर इज़ एन ओल्ड सेल्फ दैट वी आर बॉर्न विद, and it is formed by the kind of life we have had. For example, if I grew up with a father who was very abusive, so मैंने as a child सीख लिया कि अगर मैं चुप रहूँगी तो मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा. But is that my real personality? Maybe not. So then in therapy I find out I'm actually an extrovert and I like talking. So इस quiet self से talkative self जाने का जो time होता है ना दरमियान में, उसमें लोगों को anxiety होती है. तो जब मेरे पास लोग आते हैं ना कि हम anxious feel कर रहे हैं, so I actually say congratulations. It means something needs to change within you.
and anxiety is actually excitement. It's also a term that's so commonly used now. मुझे anxiety हो रही है. लेकिन आप फिजियोलॉजिकली देखो, जो anxiety के symptoms होते हैं, दिल धड़कता है, टांगे कांपती है, वो excitement में भी होती है. So it's a great thing actually. Panic attack का मतलब है कि आपका वो one way of being इतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो चुका है. Maybe for you to be passive, आप 25 साल से एक पैसिव मोड में जा रहे हैं, बट यू वर नेवर मेंट टू बी. और आपकी एक्चुअली कोर पर्सनैलिटी जो शायद अल्लाह ने बनाई है, वो एक एक्टिव पर्सन की बनाई है, असर्टिव की बनाई है. तो थेरेपी उस पुराने घर से नए घर में ले जाने में आपको हेल्प करती है. और उसके दरमियान में आपको जैसे मूवर्स को कॉल करना पड़ता है और आपको पैकिंग के लिए किसी की मदद चाहिए, इस तरह वो थेरेपिस्ट इज दैट पर्सन हु इज गोइंग टू हेल्प यू टू शिफ्ट फ्रॉम दैट ओल्ड होम टू अ न्यू हाउस. Interesting analogy. Yeah, interesting. Just came to me now. A bit weird, but why no, not? it's interesting. So what do you think about other forms of healing? Are there other forms of healing besides therapy, and do you think like they're effective as well? What if somebody doesn't want to take therapy? Maybe they can take other forms of healing. What do you think about that? I haven't really, अब so spiritual healing तो है of course, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि which is fine, I'm not gonna कि just get up and say your namaz and everything will be fine. And I heard this lecture from Numan Ali Khan once, so मुझे बड़ा अच्छा लगा. और फिर मैंने वही सोचा कि देखो, फॉर एग्जाम्पल अब जो डिप्रेशन का मरीज़ है, जिसको एक्चुअली क्लिनिकल डिप्रेशन है, और वो बिस्तर से नहीं निकलता 10 दिन, वो उठ के वुज़ू करने में कैसे जाएगा बाथरूम? मैंने एक दफ़ा किसी क्लाइंट के साथ काम किया था जिनको इतनी OCD थी कि वो दिन में 50 दफ़ा नहाते थे, उनकी स्किन छिल चुकी थी. हाउ इज दैट? वो कहते थे मैं नमाज में मैं पढ़ ही नहीं सकता, मुझे हर थोड़ी देर बाद आई वुड ब्रेक इट एंड आई वुड गो एंड डू माई वुज़ू. सो स्पिरिचुअल हीलिंग इज़ एन अमेजिंग थिंग, एंड आई थिंक पीपल हु कैन फाइंड देमसेल्व्स थ्रू दैट कनेक्शन, वट एवर रिलीजन दे प्रैक्टिस. श्योर, आई कैन ओनली टॉक अबाउट वट हैज़ वर्क फॉर मी, एंड आई डू बिलीव के माई इन्वेस्टिंग इन माई मेंटल हेल्थ ओपन मी अप टू रिसीव अदर फॉर्म्स ऑफ हीलिंग एज वेल, विच कैन बी फिजिकल थेरेपी. फॉर एग्जाम्पल, अब आने से पहले, ऑल्दो इट्स धूप थी, बट आई वॉकड 40 minutes before I came in here. So that's healing as well. It's proven कि आपके वो रिलीज होते हैं endorphins और आपकी एकदम हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. So that's there as well. But I think जैसे अब अल्लाह ताला ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड माइंड बनाया है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी बनाई है, हाउ कैन वन थिंग बी इनफ? सो इवन थेरेपी इन इटसेल्फ इज नॉट इनफ अनलेस यू ऑल्सो टेक इन अदर सोर्सेज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल somebody who comes in therapy now becomes motivated to take care of the physical health as well. योगा को प्रैक्टिस लोग करते हैं, माइंडफुलनेस है, somebody wants to go to a silent retreat for a few days. So all of them are those, जैसे वो इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी की मैं बात करी थी, कि ये सब डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि एक इतने कॉम्प्लेक्स इंसान के लिए एक चीज़ इनफ हो भी नहीं सकती. and some things work for some people and some things don't work for लेकिन माइंड क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, and it's mind over matter and mind over body, so a mental health professional is your first place through which you can learn about your mind, and then that can open avenues for all kind of feelings. But to say can just one thing, yoga can be enough, I wouldn't agree with that. Okay. So is there anything else that you feel that you would want to put out there now that you have this space? I think we've comprehensively spoken of quite a few things. I think I would just say कि खासतौर पे आजकल जो the way things are in Pakistan with inflation, with COVID, there is so much collective trauma. So by the way, it's not just personal trauma that we're going through. This collective trauma that the nation is going through. It's depressing. Like you don't feel like switching on the TV. एक hopeless feeling है. आप इर्द गिर्द और आपकी जो हमारी जो एनर्जी है वो पूरे सिस्टम में है. आप अगर कभी नोटिस करना शुरू करो, यू गो टू अ शॉपकीपर एंड यू रियली नोटिस हाउ द लुकिंग एनर्जेटिकली पीपल आर मोर डिप्रेस्ड. सो एक कलेक्टिव साइकी का ट्रॉमा तो बिल्कुल है. सो मेरे ख्याल में जैसे हम वी कीप सेइंग हाउ कैन वी गिव बैक टू सोसाइटी. सो दोज ऑफ अस हु कैन अफोर्ड थेरेपी एंड दोज ऑफ अस हु हैव द विजन टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, हमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए. और हम अपने फिर इर्द गिर्द लोगों को काउंसल कर सकते हैं. एक तो ये अंडरस्टैंड भी कि काउंसलिंग और थेरेपी फ़र्क होता है. बहुत बार लोग कहते हैं यार द फ्रेंड इज़ डूइंग द सेम थिंग as a therapist. No, it's not. A friend is offering you a space for catharsis and can give you a bit of advice. A therapist does much more than that. They're actually mapping a complete picture, a 3D map of your psyche and your
feelings and your thoughts and everything and your unconscious behaviors that you're not aware of. So those of us who can afford therapy, हमें अपने पे इसलिए काम करना चाहिए ताकि हम एक energetically collective trauma जो हम अपनी society में experience कर रहे हैं, जहाँ भी हम we can play our bit. That can be someone who's self-aware, can spend 15 minutes talking to another person, a stranger for that matter, and just holding the space for that person. वो बेशक फल वाला हो जो जिसको आपको एक, क्योंकि देखें जब आप अपने इमोशन से ट्यून्ड होते हैं ना, जैसे मेरे साथ जो होता है कि मैं जैसे अभी इंग्लैंड गई for a week, I wanted a solo trip and I was telling my friend कि मैं the minute I would enter the tube मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो जाता था, बिकॉज मैं अपनी इतनी फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड हूँ कि मैं वो एनर्जी बहुत एब्जॉर्व करती हूँ. एंड आई वाज लाइक दीज पीपल आर सो डिप्रेस्ड, देयर इज सो मच डिप्रेशन इन द कंट्री. So if we are attuned to ourselves, then we can start noticing people around us who perhaps just need those little bit time जिसमें उनको आप holding space दें. आप नहीं इन्फ्लेशन ठीक कर सकते हैं ना, आप उनके घर का खर्चा उठा सकते हैं, मे बी आप 500,000 दे देंगे, लेकिन वो 15 मिनट पे अगर आपको कुछ सुन ले और आपके साथ एम्पथाइज कर ले, नॉट सिंपथाइज. वी डोंट वांट पीपल टू फील सॉरी फॉर आवरसेल्व्स, वी वांट पीपल टू वॉक इनटू अ वर्ल्ड एंड इमेजिन व्हाट इट इज लाइक टू बी वेयर वी आर. So why not? Yeah, that makes sense. And a mentally healthy society, this is how it's gonna shift. More and more people who are mentally healthy, उससे एक ओवरऑल सोसाइटी के ट्रॉमा पे फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा. अभी आप देखो ना, एग्रेशन कितनी, एजिटेशन, हम कितनी रिएक्टिव है, क्योंकि हम पर्सनली प्रोसेस ही नहीं है. मरने मारने को हर वक्त हम तैयार हैं, बिकॉज वो सारी फ्रस्ट्रेशन हमें जहाँ मिलता है, अगेन इट कम्स बैक टू हम हेल्पलेस फील करते हैं. जहाँ हमारा जोर चलता है हम उसको वी ट्राई टू प्रोजेक्ट दैट. ओके, सो आई हैव अनदर क्वेश्चन. मुझे भी याद आया कि पहले मैं एक जनरल आपसे पूछूंगी कि व्हाट डू यू थिंक कि जो सोशल मीडिया है उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं इस वक्त? आपको क्या लगता है, हाउ इज़ दैट अफेक्टिंग पीपल? See, there's a lot of like constant information. You're constantly like, getting to know a lot of things maybe you don't even want to know. How do you think that's sort of affecting people? I think सबसे बड़ी बात वही जो आपने भी कहा ना कि फिल्टर नहीं. अब हम सब के अगर अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं जो हमने इन पर काम नहीं किया, तो हम ट्रिगर्स को तो अवॉइड करना चाहते हैं ना. तो सोशल मीडिया इज़ अ कॉन्स्टेंट ट्रिगर. इट कैन बी, फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ इस्टीम. आई वर्क विद पीपल हु हैव हैड दिस डिसऑर्डर जिसमें वो मतलब सेल्फ इमेज इश्यूज़ हैं, बॉडी शेमिंग एक्सपीरियंस की है, और अब आपके सोशल मीडिया पे पतली पतली लड़कियां और उनकी मतलब वो इतना ज़्यादा ग्लैमर है, एक प्रेजेंटिंग सेल्फ पे. सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया इज एडवोकेट्स अ प्रेजेंटिंग सेल्फ कि दूसरे कि दुनिया के आगे क्या प्रेजेंट करना है. तो आप रियल सेल्फ से तो दूर है, राइट? सो आप अगर इतना ज़्यादा उसको अटेंशन देते हैं तो आप भी ये सीख रहे हैं कि मैं अंदर से बेशक टूटी हूँ, अंदर से बेशक मेरी बुरी हालत हो, लेकिन मैं बाहर निकलते वक्त किसी को पता ना लगने दूँ. सो आप अपनी फसाड बनाते जा रहे हो. एक बात. दूसरी बात है कि देखो, एक सेल्फ है और एक एनवायरनमेंट है. अगर हम कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट को देख के ज़िंदगी गुजारे हैं कि हम खाना खाने भी जा रहे हैं तो पहले हमने सेल्फी लेके बताना है. सो वेयर इज दैट कनेक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन लाइफ वेयर आई कैन माइंडफुली ईट एंड आई कैन एन्जॉय इट, बट आई एम कॉन्स्टेंटली, आई मीन आई जस्ट सॉर्ट ऑफ मैंने अपने आप को क्या कहना चाहिए, आई गिवन माई सेल्फ अवे टू द एनवायरनमेंट, टू द सोशल मीडिया कि जो मेरे साथ करना है कर लो, एंड यू आर गोइंग टू डिक्टेट हाउ आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ. yes, whatever pleases people, because everything becomes optics. क्या चीज़ फेसबुक पे अच्छी लगेगी, क्या इंस्टाग्राम पे अच्छा लगेगा, फिल्टर्स कौन से अच्छे लगेंगे. सो फिर वो जो एक हमारी सोसाइटी में अगेन बहुत आसान है किसी को कहना कि मोटी क्यों होगी हो, शादी क्यों नहीं हो रही, एक जजमेंटल सोसाइटी है. तो हम फिर इन अ वे सोशल मीडिया उसको प्रमोट कर रहे हैं. हाँ. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट के बिकॉज पहले होता था आपका एक घर है, उसमें आपकी फैमिली है, फिर आपके थोड़े नेबर्स हैं, आपका ख़ानदान है, एंड that's all the people you knew and you chose your friends. But it's like, when you are out there in the public and आप सिर्फ किसी ऐसे इंसान की भी ले लें जिसकी फेसबुक की प्राइवेट प्रोफाइल है, बट उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत सारे, anybody they've ever met at some point in their life, and like you start putting your opinions out there या जो भी, and there's just too much. Like, do you think there's too much opinion? I think so. And देखो, are we as humans wired to hear so much feedback
all the time? I think we are, and देखो something just to add to the social media question कि उसके फायदे भी हैं. I mean I do want to add that कि it all depends कि आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं. बिल्कुल. अगर आप अवेयरनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कई दफ़ा आप अपनी एग्जाम्पल द सेम एग्जाम्पल कि अगर आपके सेल्फ इमेज इशूज़ हैं लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंटली प्रेजेंट करके आपको वैलिडेशन मिल रही है और आपको अच्छा लग रहा है, दैट्स ओके. डर वो होता है कि फिर आप एक्सेसिवली उस जगह को करना शुरू कर देते हैं कि आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में बेसिकली चले जाते हैं, रियलिटी से दूर जाते हैं. सेकेंडली ओपिनियन का आई थिंक डेफिनेटली बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमें हमारी खालाज, हमारे मामू, हर एक को इजाज़त है हमें हर बात कहने की. मोस्ट फैमिलीज में यही होता है. उसको समझा ये जाता है कि ये बहुत एक अच्छी ओबीडियंट इंसान है जिसको कोई भी कुछ कह दे उसको फ़र्क नहीं पड़ता. सो देन यू बिकम एन एडल्ट फिर एनीबडी एंड एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन ऑफ यू एंड यू आर ट्रेन टू टेक इट. सो वहाँ भी अगेन इट्स एक्सेसिव. फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज से कि इफ़ समवन गिव्स मी अ फीडबैक, unsolicited feedback, so I will take a moment to think about it, but then I can say that it's not about me and it's about the other person, and I will then sort of move on from it. But most people, I do not welcome that opinion. That's not something that we are trained to. So social media पे क्योंकि शायद आपकी वो bringing ऐसी है कि आपने एक चीज़ लगा दी और अब आपने हर एक को इजाज़त दे दी कि आपके ऊपर बोले. और मैं भी उस फेज से गुजरी थी जिसके अंदर फिर आप फिर बहस भी कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि आपने खुद वो लोगों को स्पेस दी है. सो बैलेंस इज़ इम्पोर्टेंट. आपने मुझे स्टार्ट होने से पहले सवाल पूछा था कि यू नो उसकी जो मैं यू नो बीइंग अ पब्लिक फिगर ऑन सोशल मीडिया उसकी साइकोलॉजिकल implications, and I told you know I've been doing it for many years, जिसमें फिर I'm able to sort of understand कि you know अगर discomfort एक चीज़ मुझे feel करा रही है I won't share it, and if I'm feeling fine then I will share it. But one of the things that I worked very actively on, and I started doing that about 3 years ago, was that I started keeping a self-reflective journal जिसमें I ensured that every day I took out time to really write about how I feel and what I think, to stay connected to the inner self, because I've had you know that time where I have not known who I am, felt disconnected from who I am, and it is the most, I'd say it's a very bad place to be in. It's a very scary place. It's a very scary place. And आपकी सेल्फ इस्टीम भी लो होती है, आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हो, आपको अपने इमोशंस की भी नहीं समझ आ रही. And that is something that and that's when I discovered how writing changed my life. Because when I started writing and reflecting constantly, तो मेरा वो it's like part of my routine where at the end of every week I write you know how I felt and what I've thought and what I did as well. It's interesting how that might be changing as well. Sometimes when you go back and read those journals, you notice how differently you were feeling back then to now. Yeah. So 2 things that help me sort of be more present in how I'm feeling or what I'm doing and who I am is writing. That has really changed my life. And totally endorse that reflecting, and also मेरे लिए planning बड़ी ज़रूरी होती है, वरना मेरे दिमाग में ऐसा clutter होता है ना कि क्या मैं करूँ ज़िंदगी के साथ. Doing this multitask करने के लिए planning is important. Planning is important. That really helps me you know keep my mind clear. So to answer your question then, that this is something that I do. But I think it's a great practice, and this also links to your original question कि क्या हर एक को थेरेपी की ज़रूरत है. And I said well आई थिंक मोस्टली हर एक को ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें वो एक सेल्फ अवेयरनेस की वांट है और आपकी है ना, तो आपके लिए वो राइटिंग एंड यू नो व्हाई राइटिंग इज सो इम्पोर्टेंट. एंड समटाइम्स आई आस्क अ क्लाइंट टू राइट समथिंग एंड आई राइट अ लॉट एज वेल. इट स्लोज डाउन योर माइंड टू रियली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट्स हैपनिंग. हम जब बात भी कई दफ़ा कर रहे होते हैं तो हम बस इम्पल्सिवली बात कर रहे होते हैं, तो लिखने में वो जो एक माइंड का वर्ड्स के दरमियान की जो जर्नी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. आई यूज्ड टू से a lot of the times you probably don't know this about me, but basically I have when I discovered the power of writing and how it changed the whole idea, where I learned to respond more than react, because my feelings were more sorted. क्योंकि मैं you know when I was able to give actual words to my feelings, then I was able to respond accordingly. Before that I would just feel and sort of react, but when I started writing, it's a great thing I started responding. So then I started this business, you can say, or a brand, where I made these reflective journals for people, because मैंने उसकी वो power discover की थी, and I wanted more and more people to do that. So that's something that I have, और उसमें I have all these different kind of journals that people can use. So that is part of my personal
personal journey where I That's discovered amazing. this, and Yeah. it really helped me. I love writing, so I can totally relate to what you're saying. Yeah. It's So amazing. for some reason, as soon as all of this comes here, I feel more sorted, more figured out. बिल्कुल. And it's reflection, right? Because आप लिखते हो तो आप reflect करते हो. Otherwise तो आप अपने उस thought loop में सिर्फ कहीं ना कहीं you're sort of. Yeah, I used to feel very lost, and when I started writing, I did not feel helped as you to lost. find that. That's wonderful. So yeah, I tell people, maybe it will help you, but I always recommend people to write. Express लिख के it. देखो. हाँ. It might help you a little bit. But लोग कहता नहीं हमसे नहीं लिखा जाता. Everybody has their own thing, right? True. Their But own way it of did really processing. work for me. So I think that's all I have in mind for this thank you. discussion. I think it was lovely talking to you, and I think we spoke of quite a few things. Yes. Yeah. It was so insightful. Thank you so much. I've been wanting to have this kind of session with a therapist who can really, dig deep and tell us these things in detail. Thank you for that. And I hope really that glad to hear that. it helps people as well. यहाँ पर नीचे कहीं पे I will add a way to contact you, your details and credentials, so that if somebody is looking for a therapist in Islamabad, do you do online sessions as Yes, well? yes. Or online, then we have Zara, and if you think you are interested, then please do reach out to her. Maybe she can help you. And as far as I know, I felt so comfortable talking to you, so I'm sure Same you're here. great in your sessions as well. Same here. I'm happy to hear that. Thank you for Take taking care. out time. Bye-bye. Thank you so much for tuning into this episode. I hope it helped you, and if there are any questions, anything you want to say, please leave that in the comments. Don't forget to like and also subscribe, and I'll see you in the next one. Allah Hafiz.